Hello all, welcome to CSAT today. Let's go on to the next reading comprehension question. From today we are starting with the 2019 paper. So आज से हम 2019 का पेपर शुरू कर रहे हैं and we have again taken set A. So this is 2019 set A question number 1 which is a main idea kind of question. Okay, so जो भी ये passage है वो पढ़ के आपको उसका bottom line पे पहुंचना है कि main idea क्या है passage का. So this is the passage. Let's look at the question. What is the main idea that we can infer from the passage? आप passage में से इन चारों में से कौन सा infer कर सकते हैं best, वो आपको choose करना है. So आप video pause कर दीजिए attempt करके and then you can get back with us. Let's start reading. Political theorists no doubt have to take the history of injustice, for example untouchability, seriously. तो ये कह रहा है political theorists को ज़रूरी है कि वो untouchability जैसी चीज़ों को seriously ले. The concept of historical injustice takes note of a variety of historical norms. Okay, so जो concept है historical injustice का वो variety of historical wrongs से बना हुआ है that continue into present in some form or the other. किसी ना किसी form में वो present में भी continued है and tends to resist repair. Okay, two reasons might account for the resistance of repair. क्यों resist करता है? One, पहले हम इसको समझ लेते हैं कि जैसे ये कह रहा है कि आप injustice की बात करते हैं लेकिन जो हमारे rules हैं regulations हैं उसमें injustice आ ही जाता है. For example, आप caste system को हटाना चाहते हैं, ठीक है, but फिर भी आप reservation देना चाहते हैं. तो अगर आप reservation देंगे तो obviously ये चलता रहेगा साथ में. So this is the conflict that they are talking about. Now let's look at the reasons. One, not only are the roots of injustice very deep in the history, okay, roots of injustice बहुत deep rooted है हमारे history में, okay, but injustice itself constitutes of economic structures of exploitation, ideologies of discrimination and modes of representation. Okay, so ये हमें बता रहा है कि किस किस तरह की injustice हमारे history से लेके अभी तक है ही हमारे साथ. Okay, now the second one says two, the category of historical injustice generally extends across a number of wrongs. Okay, so ये category extend करती है बहुत सारे wrongs से, as economic deprivation, social discrimination and lack of recognition. ये कुछ examples दिए उसने, ठीक है. This category is complex not only because of the overlap between a number of wrongs, overlap of number of wrongs तो है ही, but also because one or the other wrong, generally discrimination, जो हमने पहले बात की कि आप caste system हटाना चाहते हैं but आप reservation देना चाहते हैं. Okay, so ये जो discrimination है वो उभर के आ ही जाता है, tends to acquire partial autonomy over others. This is born out of the history of repair in India. So basically ये कह रहे, they are talking about the conflict that exists और historical injustice कैसे हमारे society में deep rooted है. Okay, उसके roots बहुत deep हैं and it is difficult, it is a complex issue and it is difficult to handle it. Okay, so let's read the statements. Okay, untouchability in India has not been taken seriously by political theorists. Now what are we looking at? We are looking at the main idea. Okay, is it the main idea of the passage कि untouchability को हमने address नहीं किया है ठीक से? This was one of the aspects that they were talking about. This was not the main idea. Now second one says historical injustice is inevitable in any economy and is always beyond repair. It's an extreme statement. Extreme statement के basis पे आप anyways किसी भी answer को negate कर सकते हैं. Social discrimination and deprivation have their roots in bad economies. We have nowhere in the passage spoken of bad economies. We will not go by C as well. Very clearly we can eliminate these three. Now the fourth one says it is difficult, if not impossible, to repair every manifestation of historical injustice. तो फिर वही द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द हिस्टोरिकल इनजस्टिस जो हमने पूरे पैसेज में बात की है कि ये कैटेगरी कॉम्प्लेक्स है, ओके, एंड एक्सटेंड्स अक्रॉस वेरियस नॉर्म्स और कैसे डिस्क्रिमिनेशन निकल के आ जाता है. सो दिस इज द मोस्ट होलसम स्टेटमेंट दैट वी कैन कंसिडर एज द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज. सो वी विल गो बाय डी एज द आंसर. तो ये मेन आइडिया काइंड ऑफ क्वेश्चन था, पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमी एरिया से था और आपको सबसे ज़्यादा होलसम स्टेटमेंट को स्पॉट करना होता है. मेन आइडिया का वही आइडिया होता है कि आपको होलसम स्टेटमेंट स्पॉट करना है, एक किसी एक एस्पेक्ट पे मेन आइडिया नहीं हो सकता है. लेट्स लुक एट द टफ वर्ड्स और द कीवर्ड्स फ्रॉम द पैसेज.
Untouchability, social exclusion based on caste, injustice, unequal rights, exploitation, unjust use of resources, ideologies, systems of beliefs, okay, autonomy, independence, छूट देना, okay, deprivation, lack of essential needs, discrimination, unfair treatment, किसी के साथ कैसा behave करना, किसी के साथ दूसरी तरह से behave करना, depending on certain factors is called discrimination. Represent करना, depict करना, okay, उसको showcase करना, complex, complicated, overlapping, shared characteristics, okay, and the last one is repair, which is correction, किसी चीज को ठीक करना, repair करना. So these were the keywords from the passage. So that was the first question from 2019 paper. Okay, thank you all. Let's meet for the next PYQ tomorrow.